Hi everyone, I hope that you all are good and fine. So in today's session we will solve this question number 5 of exercise 11.4. Question number 5 is stating, students, a path 1 meter is built along the border and inside border. It will be along the border but inside. ठीक है, अंदर से बना हुआ है ये पाथ of a square garden whose side is 30 meter given. Then we have to find the area of the path and then we have to find the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at rate of rupees 40 per meter square. क्वेश्चन कहता है कि एक गार्डन है जो कि स्क्वायर इन शेप है. कैसा है? शेप में स्क्वायर, और उसकी साइड कितनी दी हुई? 30. ठीक है, तो इसके बॉर्डर के अलोंग अंदर से 1 मीटर की पाथ जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई है. 1 मीटर पाथ इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग इट्स बॉर्डर फ्रॉम इनर. ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस पाथ. इस पाथ की एरिया हमें कैलकुलेट करनी है. देन नेक्स्ट इट इज आस्किंग यू टू फाइंड द cost of grassing the remaining portion of the garden. Means remaining portion means what? Excluding the path. मतलब कि पाथ जो बना है उसको छोड़कर, यानी कि ये पोर्शन जो है यहाँ पे हमें ग्रास लगाना है, और 1 मीटर स्क्वायर ग्रास लगाने की कीमत जो है 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है. 40 रुपीज़ है 1 मीटर स्क्वायर की. तो पूरे गार्डन में हमें ग्रास लगानी है तो कितना कॉस्ट पड़ेगा, ये 2 चीज़ें हमें निकालनी है. तो पहला तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, जो कि इट इज़ जस्ट एग्जैक्टली सेम एज वी हैव सॉल्व्ड ऑल द 4 क्वेश्चंस, प्रीवियस 4 क्वेश्चंस. ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिगर स्क्वायर का एरिया फर्स्ट पहले निकालेंगे और फिर स्मॉलर स्क्वायर का एरिया निकालेंगे. ठीक है, एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट देम, वी विल गेट द एरिया ऑफ द पाथ. फॉर दिस वी नीड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर. सो आउटर स्क्वायर साइड्स आर गिवन एज 30. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इनर square side. So for this we will drop these, okay, perpendiculars. Now see, look at my hand students, from here to here it has been given how much? 30. ठीक है, from here to here 30, and from here to here 1, and from here to here 1, means this portion only if we need, then 30 minus 1 and then minus 1, means basically in 30 we have to subtract 2. So the length means side will be this one. How much? Side will be equal to 28, and its unit is given how much? Meter. Okay, so 28 meter. Okay, similarly all its side will be 28 meter only. ठीक है, तो अब हम एरिया निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ द पाथ, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद द कॉस्ट, वी विल गेट द total cost. Okay, now focus here on the solution. So I am starting my solution students by writing solution. Then write here given data. What are given data? Side of garden is equal to 30 meter. Okay, side of, or you can write here each side of inner square is equal to 28 meter. Okay, now by formula here we will use the formula area of outer square is equal to side square is equal to 30 square is equal to 30 into 30. Okay, is equal to, you have to write it in column only students, otherwise you will get it confused. So it is 30 then into 30. Now multiply 3 3s are 9 students, followed by 2 zeros, so it will be 900 meter square area of the outer square. ठीक है, now similarly calculate area of inner square is equal to side square. ठीक है, is equal to side we have calculated 28, so 28 square, 28 means 28 into 28. If you will multiply this students, you will get 8 8 is 64. Okay, then 28 into 8 you will get as 784 perhaps. Okay, let me multiply here. 28 into 28, 8 4 ja 8 8 ja 64,
8 to 16, 22, 16, 4 1 5, here 4, here 8, here 7, 784 you will get, students. How much you will get? 784, and its unit will also be meter square. Now if you will calculate, if you have to calculate the area of the what you say, path, so you will have to subtract. So area of path is equal to, suppose this is A2 and suppose this is A1. So area of path will be equal to A1 minus A2, means basically 900 minus 784. Okay, so 900 minus 784, here you will get 6, here you will get 1, and here you also you will get 1, means you will get, students, here meter square, and then here you will get 116 meter square as the area of the, visible now, students? Okay, I will bring it a little down. Now it is clearly visible. Okay, so here you will get, after subtracting, you will get the area of the path as 116 meter square. Now you have to calculate its rate. So since rate is equal to, now area of the garden है ना, garden portion only, excluding this, so you have to consider this portion only, that is 20 area of the portion with 28 as its 28 as its side. Okay, so here you will have to consider this area, that is 784. So rate is equal to how much given, students? 40, and its area is given as 784. ओके, वाई आई हैव कंसिडर 784 स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एरिया जो है वो ये पोर्शन देता है, ठीक है, ये पोर्शन देता है हमें, इसे 728 को अगर हम कंसिडर किए साइड तो, और क्वेश्चन में इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड दैट यू हैव टू एक्सक्लूड द पोर्शन वेयर पाथ हैज़ बीन बिल्ड, क्योंकि उसे जो घास लगाना है वो गार्डन के पोर्शन में लगाना है, रास्ते के पोर्शन पे नहीं लगाना, रास्ते पे नहीं लगाना है, ठीक है। नाउ 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, plus 1 33, then 4 7 is 28, 28 plus 3 31 followed by 10. So this much of rupees he has to pay for the grassing in this much of area, that is 784 meter square area. So this was your question number 5 students. I hope you might have understood, and thank you for connecting with me.